हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस. अगर आप चाहते हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, बट वी विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1, कॉलोनाइजेशन मीन्स. नाउ कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है? ये हमारे ऑप्शंस है. Conquest of one country by another, subjugation of one country by another, subjugation of one country by another leading to political, social and economic changes, economic exploitation of one country by another. Now, सबसे पहले इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हट जाएंगे. मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट क्यों होएंगे. वेल, इसकी रीजनिंग ये है क्योंकि जो सब्जुगेशन है इट मीन्स taking control of another country without being any freedom for the country. इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ वन कंट्री है, इसका मतलब ये होएगा कि जो वो कंट्री है वो उसकी टेरिटोरी का पार्ट हो गई. बोल देते हैं ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट कर दी इंडिया की. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो इसका मतलब ये नहीं होएगा दैट इंडिया इज अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, but rather that India has become territory for the British. तो ये तो इनकरेक्ट होएगा. एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर. नाउ जो कॉलोनाइजेशन है, ऑल्दो इट ऑफन लीड्स टू इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कैन हैपन ड्यू टू मैनी अदर कॉजेज एज वेल. इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है. तो इसकी वजह से सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, बी और सी. नाउ ऑल्दो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज बेटर बिकॉज जो ऑप्शन सी है इट बेटर एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन. बिकॉज व्हेन कॉलोनाइजेशन अकर्स देन इट ऑल्सो लीड्स टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. इसलिए जो ऑप्शन सी है इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ let's move on to question 2. For administrative purposes, colonial India was divided into 3 presidencies. Which of the following was a presidency? Now, जो presidencies थी वो areas थे that were under control of the British Raj. That was the presidency. ये essentially states की तरह थे. तो colonial India के समय इनमें से कौन सी presidency है? एक्चुअली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये दोनों प्रेसिडेंसीज हो सकती है ड्यूरिंग दोज टाइम्स. एज बॉम्बे, मद्रास, ये दोनों प्रेसिडेंसीज थी अलोंग विद कलकत्ता. सो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट लेट्स टेक ऑन ऑप्शन बी. बंगाल इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि उस टाइम में कलकत्ता, जो ऑल्दो बंगाल का एक पार्ट है, वो अपने ही इसेंशियली अपनी एक प्रेसिडेंसी थी. इसलिए जो बंगाल है वो नहीं माना जाएगा. इसलिए आइदर करेक्ट ऑप्शंस ऑप्शन ए होएगा और ऑप्शन बी. एंड दिल्ली तो उन टाइम में प्रेसिडेंसी होती नहीं थी, इसलिए ओनली दीज 2 ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, ए और बी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3. फाइनली वोवन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया वाज रिफर्ड टू. करेक्ट आंसर क्या आएगा? मजलिन. वाई? क्योंकि पुराने टाइमों में जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो एक फाइनली वोवन क्लॉथ को देखते थे. जो मुस्लिम लोग जो हैं वो मोजुल नाम जगह में, जो करंटली आज इराक है, वो वहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर्स मुस्लिम क्लॉथ को ट्रेड करते थे. एंड जो ये मुस्लिम क्लॉथ था ये इंडिया से आता था, इसलिए यूरोपियन ट्रेडर्स ने इस टाइप के फाइनली वोवन क्लॉथ को मजलिन बोलने रेफर कर दिया. सो इसका करेक्ट आंसर मजलिन होएगा. चिंट्स और कैलिको नहीं होएगा बिकॉज जो कैलिको है इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन विच इज़ जनरली वाइट दैट कम्स फ्रॉम इंडिया. हाउएवर एक्सप्लेनेशन करनी है नेम क्यों है मजलिन, इसलिए कैलिको नहीं होएगा और चिंट्स भी नहीं होएगा बिकॉज इट वॉज अ टाइप ऑफ कॉटन विच हैड वेरियस कलर्स. तो कौन सा करेक्ट आंसर होएगा? करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन बी, मजलिन.
Why? Because European traders thought that the Muslim traders who sold these pieces of cloth in Mosul, which is present day Iraq, came from India. Now, fourth question, mural paintings are the paintings covering the whole wall. Next question, an example of sustainable development is, now, sustainable development है क्या? It is essentially a type of development which makes sure that the needs of the current generation are accounted for but not compromises the resources for the future generations. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है दैट वट एवर द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन, आजकल के लोग, वो पूरी हो जाए लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज है वो कम ना होए. इसलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑब्वियसली नॉट वेस्टिंग ऑफ पेपर, बिकॉज अगर हम पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे उसका मतलब देयर विल बी मोर रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. हेंस ऑप्शन ए करेक्ट होएगा. ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो करेक्ट होएगी ही नहीं, बिकॉज अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जल्दी जल्दी से, जैसे कि पेट्रोल, कोल, अगर हम इन सब को जल्दी जल्दी से यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएगा नहीं. और वेस्टिंग ऑफ वाटर वो भी नहीं एग्जाम्पल. इसलिए ऑप्शन ए नॉट वेस्टिंग ऑफ पेपर will be the correct answer. Question 6. The process in which deep wells are bored to take out petroleum and natural gas is called. वो वाला प्रोसेस जिससे डीप वेल्स बनाए जाते हैं, बोर्ड का मतलब डिग्ड. द प्रोसेस इन विच डीप वेल्स आर डिग्ड टू टेक आउट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा, इसको क्या बोलते हैं? वेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रिलिंग. बिकॉज in order to make deep wells, large drills are used. इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होएगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7. विच प्लेस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? नाउ, मैनचेस्टर का मतलब क्या है? मैनचेस्टर जो है वो एक सिटी है इन ब्रिटेन विच इज़ फेमस फॉर कॉटन. वाई? बिकॉज इट इज़ द सेंटर ऑफ कॉटन as it produces a large amount of cotton every year. Also, it is one of the leading producers of cotton in the world. तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सी जगह होगी? वो वाली जगह जहाँ पे बहुत सारा कॉटन प्रोड्यूस होता है. एंड इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है? ये है अहमदाबाद, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉटन इन इंडिया. हेंस ऑप्शन भी करेक्ट होएगा. Now, question 8. The average population density of the world is. Now, population density का मतलब क्या होता है? Population density means the number of people in a given area per square kilometer. तो average population density क्या है? The average population density is 45 persons per square kilometer. Moving on to question number 9. The father of the Indian Constitution is. Now, ये सब तो आप सब जानते होंगे. This is option D, Dr. B.R. Ambedkar. He is regarded as the father of the Indian Constitution. Why? Well, because during the Constituent Assembly, the drafting committee was set up, and the person who headed the drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. Hence why he is known as the father of the Indian Constitution. Next question number 10. Rule of law means. Now, rule of law का मतलब है all of these. Why? Because in the rule of law, everybody is equal before the law, whether it be a small farmer or the president of the country. Both are equal. Similarly, same laws are applicable to all and no one is above the law. इसलिए all of these will be the correct answer. फिर बाद में question 11. The main players in a criminal justice system are. Main players का मतलब क्या है? Main players being the crucial or the major elements in the criminal justice system.
तो जो मेन प्लेयर्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो कौन कौन है? दे आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज. Hence, option D, A, B, C, D, it will be correct. Because all of these, police, public prosecutor, defense lawyer, the judge, all of them play a crucial role in the criminal justice system. Hence, option D will be correct. Moving on to the final MCQ question, question 12. The important characteristic of public facility is that its benefits can be shared by many people. How so? Well, because जो public facilities है, they are available to every section of the society, not just the privileged or the underprivileged. Because of this, whether it be the upper castes or the lower castes, different religions, different genders, every single person can enjoy the benefits of public facilities. Hence, how it is shared by many people. This is because, well, as I said before, every person has access to public facilities. इसकी वजह से option B will be the correct answer. So now let's discuss some of the question answers. Firstly, let's start with question 13. What were the political causes of the revolt of 1857? Now, there were many causes for the revolt of 1857, but we currently need to tell only the political causes. Political का मतलब क्या है? In relation to politics. So, what were these causes? Well, the first political cause of the revolt was the annexation of many kingdoms by the British under various policies, such as the doctrine of lapse or the subsidiary alliance. So, that was the first cause. The other cause was because of the British stripped out rulers of their titles and kingships. And finally, the third cause was due to the disrespect the Britishers had given to the various local rulers. This hurt the sentiments of the commoners, or also known as the common people. And these three were the political causes of the revolt that happened in 1857. Moving on to question 14. What attracted European trading companies to India? Well, the answer for this question is that the European traders were attracted to India because of many commodities such as finely woven silk cloth and cotton, along with other commodities such as indigo, pepper, cloves, spices, etc., were in high demand in Europe. So they bought these items for cheap in India and sold them at high prices in Europe. This proved to be quite profitable. So this attracted the European traders to come to India. Now the next question is question 15. How did knowledge of ancient texts help the reformers to promote new laws? Well, this knowledge of ancient texts helped them, as by the knowledge of ancient texts, including religious scriptures, philosophical writings, and legal codes, it provided reformers with a foundation for advocating new laws and social reforms. By referencing these ancient texts, reformers could argue that their proposed changes were in line with traditional values and principles, thereby gaining support from the conservative segments of society. Conservative meaning those who want to stay with the traditional system, those who do not accept change easily. Additionally, reformers often used the examples and teachings from ancient texts to challenge existing social norms and practices, highlighting the need for change and innovation in the face of evolving societal needs.